Hello friends, welcome to Power Electronics class. As we have discussed in last class that the gate drive circuit must be turned off as SCR get turned on to reduce the unnecessary power loss. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे ही SCR टर्न ऑन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गेट ड्राइव सर्किट को हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए टू रिड्यूस अननेसेसरी पावर लॉस। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में current will be large, anode to cathode current will be large. It will be in kiloampere and anode to cathode voltage is very small, that is 1 volt to 2 volt. This is on state voltage drop in SCR. So forward conduction mode में एनोड टू कैथोड करंट बहुत ज़्यादा होता है, इन रेंज ऑफ किलो एम्पियर, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज 1 वोल्ट से 2 वोल्ट होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ड्रॉप SCR। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR। In this mode, SCR must be in reverse biased condition. That is, anode must be connected to negative terminal of supply and cathode must be connected to positive terminal of supply. रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम SCR को रिवर्स बायस करते हैं, दैट इज एनोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं। P N P N. SCR is 4-layer device having 3 terminal. This is anode, this is cathode. Anode will be connected to negative terminal of supply and cathode must be connected to positive terminal of supply. In reverse blocking mode, gate current must be 0. So
gate terminal will not connected to cathode. It will be open circuit. So gate current will be 0. So in this mode, cathode voltage will be greater than anode voltage, because anode is negative and cathode is positive. एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तो कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा? कैथोड का पोटेंशियल एनोड के पोटेंशियल से ज्यादा होगा. दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज. दिस इज जंक्शन J1, this is junction J2, this is junction J3. So as we move from, जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ेंगे, वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि कैथोड का वोल्टेज एनोड के वोल्टेज से ज्यादा है. जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ेंगे, वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. So as we move from cathode to anode, the voltage will decrease. जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ेंगे, वोल्टेज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि कैथोड का वोल्टेज एनोड के वोल्टेज से ज्यादा है. So this outer N layer is connected to cathode terminal. तो इस N लेयर का पोटेंशियल इस P लेयर के पोटेंशियल से ज्यादा है, क्योंकि ये N लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? कैथोड से. अगर हम बात करें J3 जंक्शन की, J3 जंक्शन के एक साइड P लेयर है और दूसरे साइड N लेयर है, और ये N लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड है कैथोड से. So the voltage of this outer N layer will be greater than this P layer. N लेयर का पोटेंशियल P लेयर के पोटेंशियल से ज्यादा है. जैसा कि हम जानते हैं, जब N लेयर का पोटेंशियल P लेयर के पोटेंशियल से ज्यादा होता है, तो जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है. क्या होता है? रिवर्स बायस्ड. अगर मैं J2 जंक्शन की बात करूं, जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं, वोल्टेज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. J2 जंक्शन के एक साइड P लेयर है और दूसरे साइड N लेयर है. So this P layer is near to cathode and this N layer is near to anode. तो P लेयर का पोटेंशियल N लेयर के पोटेंशियल से ज्यादा है. जैसा कि हम जानते हैं,
जब पी लेयर का पोटेंशियल एन लेयर के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। अगर हम बात करें J1 जंक्शन की, J1 जंक्शन के एक साइड N लेयर है और दूसरी साइड P लेयर है और ये P लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड है एनोड से और एनोड का पोटेंशियल क्या है, माइनस है। और हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। So if we talk about J1 junction, P लेयर का पोटेंशियल N लेयर के पोटेंशियल से कम है, Vp is less than Vn. That's why it will be in reverse biased condition. So J1 junction will be reverse biased, J3 junction will also be reverse biased, but J2 junction will be forward biased. When we reverse bias the SCR. जैसा कि हम जानते हैं, जो जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होता है, जो जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होता है उसके अराउंड डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। जब हमने SCR को रिवर्स बाइस किया तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है। So there will be a depletion layer around J1 junction and J3 junction. As we know that the junction which is reversed bias there will be formation of depletion layer around it. तो कितने जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है? J1 जंक्शन और J3 जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है। तो कितनी डिप्लीशन लेयर बनेगी? 2 डिप्लीशन लेयर। एक अराउंड होगी J1 जंक्शन के और एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी J3 जंक्शन के अराउंड। And what do you mean by depletion layer? The layer in which there are no free charge carrier. Only immobile ions are present. Depletion layer में सिर्फ immobile ions होते हैं। इस लेयर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। No free charge carrier. Only immobile ions are present. Immobile means जो कि चल ना सके।
तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन के अराउंड डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। This is depletion layer. This is depletion layer. तो रिवर्स बायस कंडीशन पर जब हमने SCR को रिवर्स बायस किया तो दो जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, इसीलिए इन दोनों जंक्शन के अराउंड डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पी साइड डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव आयंस होते हैं। कैसे आयंस होते हैं? नेगेटिव। और पी साइड एन साइड पॉजिटिव आयंस होते हैं। पी साइड नेगेटिव आयंस होते हैं और एन साइड पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कि इमोबाइल होते हैं। पी लेयर में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, these are the holes. और एन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, these are the electrons. एन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी लेयर में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, so these are minority charge carrier in P layer. N layer में holes are minority charge carrier. So this is representation of holes and this is representation of electrons. डिप्लीशन लेयर अपने में से फ्री चार्ज कैरियर को फ्लो होने नहीं देते हैं। सो आइडियली इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन ऑफ SCR the current will not flow from anode to cathode. So in reverse bias condition of SCR, जब हम SCR को reverse bias condition में करेंगे, due to these two depletion layer, the carrier cannot move through SCR. So cathode
So anode to cathode current will be 0. So cathode to anode current will be 0 ideally. It will be approximately equal to 0 ampere. But practically a small leakage current will flow through SCR in range of microampere to milliampere, because in reverse biased condition of SCR, the two junction of SCR, that is J1 junction and J3 junction, will not allow the movement of free charge carrier through it. जब हम SCR को रिवर्स बायस कंडीशन में रखेंगे तो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन SCR का फ्री चार्ज कैरियर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा. सो आइडियली in reverse biased condition of SCR, anode to cathode current will be 0 ampere. So SCR will be off because current will not flow. But practically anode to cathode current will be slightly greater than or equal to 0 ampere in range of microampere to milliampere, which is approximately equal to 0. So in reverse blocking mode of SCR, current will not flow through SCR, that's why SCR will off. In reverse blocking mode. This small current which flow in reverse blocking mode having very small magnitude known as reverse leakage current in range of microampere to milliampere of negligible magnitude. So when we will reverse bias the SCR, the current will not flow through SCR and large voltage will appear across the SCR. जितना वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा वही SCR के क्रॉस डेवलप हो जाएगा. Since anode is negative and cathode is positive, cathode voltage is greater than anode voltage.
then anode to cathode voltage, that is VA minus VK, will be negative. So, in reverse bias condition of SCR, a large negative voltage will appear across SCR. So, voltage across SCR will be equal to negative, and this will be large voltage. And as we have discussed, anode to cathode current will be very small. Therefore, in reverse blocking mode of SCR, anode to cathode voltage will be large, which will be negative, and anode to cathode current will be very small. Which will be negative. So in reverse blocking mode, anode to cathode voltage क्या होगा? नेगेटिव, और एनोड टू कैथोड करंट क्या होगी? नेगेटिव. एनोड टू कैथोड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि किसके इक्वल होगा? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा. वोल्टेज अक्रॉस SCR will be equal to supply voltage having large magnitude, and anode to cathode current will be very small, in range of microampere to milliampere. That's why SCR will off in this condition. अगर हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, this is reverse voltage, because anode is connected to negative terminal of supply and cathode is connected to positive terminal of supply. If this anode to cathode voltage will be equal to reverse breakover voltage. If this reverse voltage will increase to reverse breakover voltage, if this anode to cathode voltage is increased in negative direction, that is reverse voltage को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जो डिप्लीशन लेयर J1 जंक्शन के अराउंड और J3 जंक्शन के अराउंड फॉर्म हुई थी, इन दोनों डिप्लीशन लेयर में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ग्रेडियंट.
सो जैसे जैसे हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, और एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, दैट इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, there will be avalanche breakdown in depletion layer 1 and depletion layer 2. So at this voltage there will be avalanche breakdown in both depletion layer. In both depletion layer. So depletion layer will vanish. Depletion layer खत्म हो जाएगी at this voltage, reverse breakover voltage. और एक large current will flow from cathode to anode. So a large current will flow in SCR in negative direction, that is from cathode to anode, as compared to forward conduction mode. This current will flow from cathode to anode. So a large voltage will across this SCR and large current will flow through SCR. This reverse breakdown voltage will be in kilovolt, will be in kilovolt. So if we increase the anode to cathode voltage slightly greater than or equal to reverse breakdown voltage, a large negative voltage will appear across the SCR and large current will flow through SCR from cathode to anode. So due to this large negative voltage and this large current, power dissipation will be very high due to this large voltage and this large current. Due to this, temperature around junction will increase. If this temperature is greater than permissible value, then SCR may damage.
अगर हम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं तो लार्ज नेगेटिव वोल्टेज will appear across SCR and large current will flow through SCR in reverse direction as compared to forward conduction mode. That is, it will flow from cathode to anode. So due to this large voltage and large current, power dissipation will be very high around junction. Therefore, temperature rise will occur. Due to this large temperature, SCR may damage. Therefore, SCR must not be operated at this voltage. Reverse voltage must be less than reverse breakover voltage so that SCR may not damage. अगर रिवर्स वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तो SCR will save. और अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो SCR में डैमेज. As you see here, एनोड पे कैसी पोलैरिटी है? नेगेटिव. और होल पे कैसी पोलैरिटी होती है? पॉजिटिव. एनोड पर नेगेटिव पोलैरिटी और होल पे पॉजिटिव पोलैरिटी. तो एनोड होल को अट्रैक्ट करेगा. कैथोड पे कैसी पोलैरिटी है? पॉजिटिव. और एनोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. So cathode will repel holes and anode will attract holes. So holes will move from cathode to anode. Anode attracts hole and cathode will repel hole. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. अपोजिट चार्ज. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय कैथोड. एनोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. सो एनोड विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. So electrons will move from anode to cathode. Holes will move from cathode to anode and electrons will move from anode to cathode. जैसा कि हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होती है. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. सो करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट, which is in opposite direction as compared to current which will flow in forward conduction mode. So in reverse blocking mode the current will flow from cathode to anode.
in range of microampere to milliampere, which is approximately 0. Therefore, if anode to cathode voltage is less than reverse breakdown voltage, SCR will shift. And if anode to cathode voltage is greater than reverse breakdown voltage, SCR may damage. This is reverse voltage. Means anode is negative and cathode is positive. SCR का रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज must be slightly greater than or equal to forward breakover voltage. SCR का reverse breakdown voltage must be slightly greater than or equal to forward breakover voltage. तो हमने SCR के तीनों मोड्स डिस्कस कर लिए हैं. In next session, I will discuss static VI characteristic of SCR, which will be based on forward blocking mode of SCR, forward conduction mode of SCR, and reverse blocking mode of SCR.